हेलो गाइज एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गेयर्स। अभी मैं चला रहा हूँ रेंज रोवर। दिस इज द वोग SE वेरिएंट एंड दिस इज द लॉन्ग व्हील बेस वर्जन ऑफ दिस कार। सो दिस इज कॉल्ड द रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस वोग SE इन द ब्रांड्स टर्मिनोलॉजी। इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में आपको मिलती है एक 3 लीटर V6 डीजल इंजन। दिस प्रोड्यूसेस 258 PS ऑफ पावर एंड 600 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइविंग एड्स की अगर बात करें तभी द लिस्ट इज सो एग्जॉस्टिव। आई एम गोइंग टू जस्ट लुक एट ऑल दिस एंड रीड आउट। इसके साथ आपको मिलता है टेरेन रिस्पॉन्स 2 विच इज एक्चुअली योर 4x4 टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू मैनेज हाउ यू ड्राइव दिस कार ऑफ द रोड इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर। इसके बाद आपको डायनामिक रिस्पॉन्स मिलता है। यू गेट एक्टिव रेयर लॉकिंग डिफरेंशियल्स। यू हैव एन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। इसमें आपको पैडल शिफ्ट भी दिए गए हैं एंड यू ऑब्वियसली हैव अ स्पोर्ट मोड एज वेल। देन यू हैव अ प्रॉपर लो रेंज रेशियो। अगर आपको इस गाड़ी के साथ हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करनी है, दिस कार कैन डू दैट। आई डोंट नो कौन करेगा 3 करोड़ की अपनी इस लग्जरी SUV के साथ ऑफ रोडिंग। द प्राइसिंग ऑफ द रेंज रोवर इज स्प्रेड अक्रॉस वेरिएंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1.8 करोड़ एक शोरूम ऑल द वे अप टू 4 करोड़ एक शोरूम। तो दैट इज द प्राइस दैट यू हैव टू स्पेंड व्हेन यू वांट टू बाय दिस कार। बाकी सारे फीचर्स की अगर बात करेंगे, यू गेट इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन, एक्टिव स्पीड लिमिटर, you obviously have a power steering, you have hill descent control, roll stability, emergency braking, automatic access height and what not. Let's just throw this and let's start driving. चलिए देखते हैं कैसी है ये गाड़ी चलाने में, how easy it is. It is a big car. It is 200 millimeters longer than the short wheelbase variant. तो क्या ये आसान है, क्या ये डिफिकल्ट है, क्या ये enjoyable है? Let's check it out. As soon as you get behind the wheel of the Range Rover long wheelbase Vogue SE, this is a big 3 liter engine and it delivers quite an impressive amount of torque. Torque is the basic necessity इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, and with all of that it has under the hood, the car doesn't feel slow and sluggish at all. Yes, it is big, yes, it is long, it is a brawny butch SUV, but it doesn't feel slow by any standards. और वैसे भी जब आप इतनी बड़ी गाड़ी खरीदते हो, you are not going to drive really fast and furious. You are going to make sensible moves because this is a lot of real estate to manage out on the streets. अब सबसे पहले इसकी कूल फीचर्स की बात करेंगे। Look at this. I have turned on the semi-autonomous technology. तो अभी ये व्हाइट लेन्स जो हैं रोड पे, उस हिसाब से ये गाड़ी खुद ही गाड़ी अपने आप स्टीयर करते रहेगी। Now I am actually feathering the accelerator pedal, but if I also set the cruise control, तो उस सिचुएशन में ये देखिए अभी गाड़ी आगे की गाड़ियों से गैप मेंटेन करेगी। इट विल ऑल्सो कीप स्टीयरिंग इटसेल्फ विद इन द लेन। तो लेन मैनेजमेंट सिस्टम भी है इसमें एंड इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइव फॉर यू। अब आई एम अप्रोचिंग अ ट्रक विच इज इन फ्रंट ऑफ मी, तो ऐसे सिचुएशंस में मैं गैप भी मैनेज कर सकता हूँ। ये देखिए अभी गाड़ी ने आगे के ट्रक को नोटिस किया है and it has slowed down. So this was about the very cool thing that the Range Rover Vogue SE has to offer to you. But how about driving it in a very normal way out on the Indian streets? तो गाड़ी चलाने में काफी आसान है। The steering wheel is nice. Yes, it is a big steering wheel, but it is nicely leather wrapped. Steering wheel heated भी है। अगर आपके हाथों पे आपको AC वेंट की वजह से थोड़ी ज्यादा ठंड लग जाती है, you can just have it warmed up so that you have a nice and comfortable drive. The steering wheel response is nice. Yes, this is a big car, but the steering is actually quite direct. थोड़ी बड़ी है गाड़ी. It rides on electronic air suspension. तो थोड़ा body roll आपको feel होगा अगर आप you make some steering inputs which are a bit too sharp and something which you are doing not considering the weight and the width of the car. But overall, otherwise the car is brilliant. It rides on 21-inch rims. 21 इंच के alloy wheels इसके हैं, लो प्रोफाइल टायर्स हैं, बट थैंक्स टू दैट एयर सस्पेंशन द थर्ड्स आर मैनेज सो नाइसली कि आप बहुत आराम से बैठते हो इस गाड़ी में। आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। When we were out driving this car, we also drove over a small steep incline which was a little of small rocks, but even in that situation हमने जब लो रेंज भी एंगेज किया था, the car just managed to glide over those patches. Yes, आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट फील होती है, but there were no thuds at all. और गाड़ी में एक भी बार ना ट्रैक्शन कंट्रोल को किक इन करना पड़ा. There was no slips or anything. The car could do that very easily. अब the main point is when you buy a car which is going to cost you 3 crores and more, आप इस गाड़ी में ऑफ-रोडिंग नहीं करने वाले हो. But then for times when you want to do it, the car is capable.
इसमें आपको काफी सारे मोड्स मिलते हैं. यू हैव रेन मोड, यू हैव सैंड, यू हैव वेट रोड्स, यू हैव रॉक क्रॉलिंग, ऑल ऑफ दैट. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव द डायनामिक मोड व्हेन यू आर ड्राइविंग आउट ऑन द हाईवेज. तो आप इस गाड़ी को फास्ट भी चला सकते हो. The good thing about the Range Rover Vogue SE with this 3-liter motor is that it is not bad in terms of efficiency. Now if I am going out for a long drive on a long highway journey, this car can deliver, you know, as good as 14 to 15 kilometers to a liter of mileage. अगर मैं cruise control set कर देता हूँ at say somewhere around 80 or 90, and if this car delivers me 14-15 kmpl of mileage, it is very impressive. I mean, कोई रीजन नहीं है कि आपको ये पसंद ना आए. लेकिन जब आप इस गाड़ी को सिटी में चला रहे हो, से फॉर एग्जांपल यू आर स्टक इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, द फ्यूल एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 12 to 13 liters per 100 kilometers. So that is going to be noticeably less than 10 kmpl. Let's talk about NVH levels. गाड़ी में आपको एक 3000 cc डीजल इंजन मिलती है, but it is not heard inside the cabin at all. Now I'm cruising somewhere close to 100 kilometers per hour. I cannot hear the diesel engine. Obviously, this is an expensive luxury SUV. This is a Range Rover. तो इसमें आपको डीजल इंजन का क्लैटर तो सुनाई नहीं देता है. Also, the road noise is well insulated. Wind noise भी काफी कम अंदर सुनाई देता है. So you, when you're seated in the back seat of this car, you are going to have a very enjoyable time. इस गाड़ी में आपको comfort के हिसाब से कोई कमी फील नहीं होगी. Talking about driver comfort, the seat is electrically adjustable. I really like how much comfort it offers. The way the seat is positioned, the way you can adjust the lower level of the seat, so you can control आपको under thigh support जितना चाहिए. लेकिन इसका एक नेगेटिव ये है, I have not been able to find any adjustment for the lateral support in this seat. तो उसकी वजह से even though I am of a medium build, मुझे वो lateral support थोड़ा ज्यादा टाइट फील हो रहा है. But apart from that, obviously ज्यादा कुछ नहीं है बात करने के लिए. This is a top spec car that you can buy. अगर आपको एक लग्जरी एसयूवी खरीदनी है, there is nothing better than a Range Rover. जब भी आप इसे देखोगे, जब भी आप इसे चलाओगे, this is quite a statement to make. बहुत सारे एक्सोटिक कार मैन्युफैक्चरर्स भी अपनी लग्जरी एसयूवीज मार्केट में ला रहे हैं इन द इंडियन मार्केट, which even cost much more than the Range Rovers. But let me tell you, this is the thing to buy. There is a dynamic mode to drive, जैसे कि मैंने आपको बताया. स्पोर्ट मोड भी है, पैडल शिफ्ट्स भी है. But in my past 2 days, I have not engaged it even once. That is not something that you would like to do in a car of this size. These cars, इतनी ये जो बड़ी luxury cars होती हैं, these are meant to be driven in a way. You have to drive them in a nice, elegant way, ताकि not just you have a very comfortable drive, but also other onlookers, उन्हें भी लगता है कि गाड़ी has some class, and the way it is being presented, you have to take care of that. But of course, those who like to exploit all the horsepower that's under the hood, you have all these options. तो अभी मैं सम अप करने वाला हूँ मेरी ड्राइव एक्सपीरियंस. इट इज वेरी गुड इन द विजिबिलिटी डिपार्टमेंट. काफी कमांडिंग व्यू आपकी होती है. आई एम सीटेड एट द लोएस्ट सीट हाइट, बट आई कैन स्टिल सी द एंटायर बॉनेट. तो उस हिसाब से आप बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे इनसाइड द रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस. ऑल्दो दिस इज अ बिग कार, you will not be scared to take it out on the streets. The next important thing is the NVH levels. इतने brilliant, इतनी quiet इसकी cabin है, so well insulated कि you will think that this is not really a diesel V6 but it is actually a petrol. The third thing that I liked about the car is the ride quality. Of course, 21 इंच के रिम्स पे गाड़ी चल रही है, तो अगर आप बड़े खड्डों पे से चलाओगे तो थोड़ी बहुत थर्ड्स की आवाज आपको फील होगी और थोड़े जोल्ट्स एंड जर्क्स आपको अंदर फील होंगे. But for the majority of the Indian road terrain, these rims, although on the larger profile, they are not really disturbing the ride quality. The ride quality is quite impressive. And the fourth good thing, obviously people who are buying such cars in this category don't really care about, is the fuel efficiency. I have been impressed that this car could manage somewhere close to 13-14 kilometers to a liter of a mileage, and inside the city it could deliver somewhere close to say 7 or 8 kmpl. That is not a bad figure at all. तो कमेंट से मुझे बताइए क्या लगता है आपको about the Range Rover Vogue SE, the variant that I am driving today. Also, would you be interested if we should put up a review for the Range Rover 5-liter supercharged variant? Of course, the brand doesn't have that as a media car. That car is going to cost upwards of 4 or maybe 5 crore rupees. So this is what we get. This is what we can experience, and our experience has been very, very good. I will see you next time. I recommend that you wear your seat belts, and whenever you're driving out on the highways, do not overspeed. Always keep in mind कि आपकी गाड़ी की क्या limitations हैं, so that you are not just safe for yourself
but also other road users out on the highway. Goodbye.